Hello guys, welcome back to the Astro where you say I teach. Hello guys, welcome back to the channel. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं complexation. So let's begin. So आज के कंटेंट्स मेजरली होने वाला है कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, चिलेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. इसे शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे. तो कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लासिक डेफिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे देखेंगे. रिजल्ट्स बाय donor acceptor mechanism between two or more different chemical constituent and also formed by a ligand acceptor mechanism. अभी donor acceptor mechanism and ligand acceptor mechanism are same and there are two examples. दो examples दिए हुए हैं. First is potassium hexa cyanoferrate and second one is EDTA, which is ethylene diamine tetraacetic acid. And further what are coordination compounds. अभी coordination compounds क्या होता है वो पहले सीखना पड़ेगा. So a coordination compound contains a central metal atom जो centrally रहता है and an atom and which are surrounded by number of positively charged atoms or ions or neutral molecules which are called as ligands. और the bond between that atom and the ligand is called as coordination bond. So for an example coordination bond के example के लिए CuNH3 4 times and plus 2 outside the molecular charge. So इसमें central metal atom कौन सा होगा? It obviously it will be copper. And the donor atom कौन सा होगा? Obviously it will be the ligand, and in this case ligand is ammonia, and which are 4. So let's see what are basically called as ligands. So ligands is a molecule or ion which coordinates with metal atom in a coordination compound and called as a ligand. It gives both the electrons, that is the lone pair of electron to the metal atom, and leads to the formation of metal ligand coordination bond. Obviously वो अम्मानी का बेटा है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, so it will coordinate or it will gives both the electron pair required for the formation of covalent bond and form the covalent bond which is called as coordination bond. So ligand molecules का दो example दिए हैं. First one is the potassium ferrocyanide, and this in this example central atom will be Fe, that is ferro, and or ferro or ferrous, or we called as iron. And the ligand molecule will be cyno, Cn. Now this ligand molecule will donate a pair of electron to the Fe or the metal atom, metal ion, and lead to the formation of the complex or coordination bond. एंड इन सेकेंड एग्जांपल में देखो कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड है. अभी कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड में सबसे पहला सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है? दैट इज कोबाल्ट. एंड अमोनिया क्या है? लिगैंड. एंड लिगैंड इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस बेस, क्योंकि लुईस लुईस ने कहा था बेस इज एन सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन. सो लुईस बेस इज अमोनिया एंड दिस इज कॉल्ड एज लिगैंड. So classification of ligands. The ligands are majorly classified into two types only. First is monodentate or unidentate ligand, and second one is a polydentate ligand. So monodentate ligand में सिर्फ एक ही donor atom होता है, and in polydentate ligand it has two or more than two donor atoms. फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगैंड में एग्जांपल देख लेते हैं. दैट इज अमोनिया विच हैज़ ओनली वन डोनर एटम विच इज़ अमोनिया. अमोनिया मॉलिक्यूल में वो सिंगल एटम है जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टू lead to the formation of a covalent bond. But in polydentate ligands here we have two examples. First is ethylene diamine and second one is ethylene diamine tetraacetic acid. And now in both these ethylene diamine में सिर्फ दो ही अटैचमेंट साइड्स है और वो दो अटैचमेंट साइड इज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. बट इन द केस ऑफ EDTA it has a 6 donor atoms, and that 6 donor atoms can individually contribute in the formation of the coordination complex. So now coordination number, it is simply the number of the ligands which are directly bonded to the central atom or the ion in a complexes. जैसे हम लोगों ने previous slides में देखा था potassium ferrocyanide, in that FeCN6 था. Cn was the ligand, Fe was the central atom, but Fe के around 6 CN molecule सराउंड करके बैठे थे. 6 CN मॉलिक्यूल ने डोनेट किया था, 6 CN मॉलिक्यूल ने इन्वेस्ट किया था. सो दैट 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर कि Fe कितने लिगैंड के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. इन द केस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट वी नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe is 6.
So steps involved in the complex formation. तो सबसे पहला steps है filled ligand orbital with overlap the empty metal ion orbital. Ligand orbital filled क्यों रहता है? क्योंकि it is an electron donor and electron acceptor is a metal ion. So empty metal ion orbital overlap होगा. So second one is ligand जो Lewis base है, donates the electron pair. उसके बाद में जो metal atom metal ion है which is Lewis acid which accepts the electrons and उसके बाद में formation of a covalent bond and the formation of complex ion, and that complex ion or that covalent bond is known as coordination bond. Classification of complexes में सबसे पहला metal ion complexes which has a metal ion इन प्लेस ऑफ सेंट्रल एटम. अभी सेंट्रल एटम की जगह पे एक मेटल आयन रहेगा एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज मेटल आयन कॉम्प्लेक्स. सो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलिफिन टाइप्स, एरोमेटिक टाइप्स, और एरोमेटिक टाइप्स आर फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू पाई कॉम्प्लेक्सेस, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस. उसके बाद में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस विच हैज एन सेंट्रल एटम बट वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. सो क्वीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस and polymer type. And the last one is inclusion or occlusion complex which is channel lattice type, layer type, क्लैरेट्स टाइप और मोनोमोलिकुलर टाइप्स. बट ये सब कॉम्प्लेक्सेस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून एंड अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने कलीग्स को, अपने फेलो फ्रेंड्स को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लेके आता रहता हूँ. एंड डू कमेंट योर टॉपिक बिकॉज एज अवर मोटो सेज यू से आई टीच. सो कमेंट करते रहना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.